Hello everyone, my name is Ritvika Vyas, your science mentor for class 8. And today we are going to study further in your chapter 2, that is the invisible living world beyond our naked eyes. And in this session, we are going to talk about our connection to microorganisms and cell, which is the basic unit of life. This session is in continuation to your previous session where we have already talked about microorganisms like bacteria, fungi, and how are they giving us our fermented foods like curd, bread, etc. And today in this session we are going to talk about yet another important microorganism, algae. Have you ever heard the word algae? Okay, answer this question. Have you ever seen a green layer on dirty water? Let's say a pond or water that is stagnant. Have you ever seen that? Or on a rock, on a tree, that green layer? That is algae. That is the microscopic algae. हम हिंदी में से काई बोलते हैं. And why is it green in color? Because it has chlorophyll in it. And since it has chlorophyll, it can photosynthesize. That means it can make its own food and it will release oxygen as a bonus gift. So what are algae? They are microscopic plant-like organisms. Why plant-like? Because they can photosynthesize just like our plants. And they are found everywhere, like in water, soil, air, on trees, right? These microorganisms can be found everywhere. And what are they doing? They are capable of making their own food. They act like plants. Plants trap carbon dioxide, use water in the presence of sunlight and chlorophyll, and produce what? Their food, that is glucose, and release oxygen. Similarly, these algae also, because they have chlorophyll, they can produce their own food and they will release oxygen into the air. And a very important thing to remember that they produce over half of Earth's oxygen. That means the oxygen that we breathe, half of it is produced by these tiny microorganisms that you cannot even see. Isn't it fascinating? What else is there to know about them? Why are they so important? Because they are first of all natural cleaners. They are trapping carbon dioxide, right? So they are cleaning our environment. Therefore, they are natural cleaners and they are rich in nutrients. Why are they rich in nutrients? Because they are producing the food. Being a vegetarian, what are you eating? Apart from animals, we are omnivores, right? We eat plants and animals both. But why are plants important for us? Because they are nutritious, right? Therefore, in a vegetarian diet, you can see lot of green plants. Why? Because they are nutritious. Since they are making their own food, they are rich in vitamins and minerals. Similarly, these algae are also rich in nutrients and food for many aquatic animals. These fishes and aquatic species, they eat this algae for their nutrition. So they act as even food for aquatic species. They are used to make biofuel. In the previous session, we have discussed that microorganisms, they produce a gas, biogas, as byproduct of their digestion. Therefore, they can also be used as a biofuel. Which gas was it? Methane, right? और हम क्या जान रहे हैं इनके बारे में कि ये और किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? दे आर मेकिंग आवर सप्लीमेंट्स ऑल्सो. दे आर हेल्प अस प्रोड्यूसिंग आवर हेल्थ सप्लीमेंट्स. ये इतने न्यूट्रिशियस होते हैं दैट supplements can be made from these algae. Specific vitamins or minerals are extracted from these algae. Which algae? They can be spirulina, chlorella, diatoms. But what are we doing? We are damaging them. How are we damaging them? We are polluting. We are destructing their habitats. हम ये सब चीजें करके environment को harm कर रहे हैं. और जब environment harm होगा तो उसमें algae भी harm होगा because it is staying in that environment. What are we doing? We are polluting the water. Correct? And algae in it will also suffer. Their population will decrease. उससे climate change हो रहा है.
क्लाइमेट चेंज से भी एल्गी की पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा, और एल्गी की पॉपुलेशन में डिक्रीज आएगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन लेवल्स कम होंगे। ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स कहां से ले रहे हैं, इनसे ले रहे हैं। दे आर सो न्यूट्रिशियस। एक्वाटिक स्पीशीज हार्म होंगी, क्यों, क्योंकि ये उनका भी तो फूड है। एंड वी आर डिस्ट्रक्टिंग देयर हैबिटेट्स, जहां ये लोग सर्वाइव करते हैं, फॉरेस्ट एंड ग्रीन बॉडीज, वी आर डिस्ट्रक्टिंग देयर हैबिटेट्स। और प्रोटेक्ट करना क्यों जरूरी है, बिकॉज दे प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर बैलेंसिंग द ऑक्सीजन, राइट, दे आर प्रोवाइडिंग आवर न्यूट्रिशन एंड फूड। तो ये हमारे एनवायरमेंट को भी तो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए इनका प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। व्हाई, बिकॉज दे आर ऑल्सो मेंटेनिंग ऑक्सीजन बैलेंस apart from giving us our nutrition. Now there is a very interesting algae spirulina. Spirulina ये कुछ ऐसा दिखता है। Why is it important? Because it is a superfood. And why is it a superfood? Because it is very healthy and nutritious. क्यों है? क्योंकि it is rich in vitamin B12, it is rich in protein, and it is low in fats and sugars. और क्या चाहिए, राइट अभी बहुत सारे डाइट्स होते हैं, आपने बहुत सारी चीजें सुनी होंगी, बट ऑन एन एवरेज हर डाइटिशियन न्यूट्रिशन क्या रिकमेंड करता है, कंज्यूम समथिंग दैट इज रिच इन विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, राइट, एंड दैट इज लो इन कार्ब्स एंड फैट्स, राइट. सो स्पिरुलिना consists everything that we need, therefore it's a superfood, right? Why is it a superfood again? Because it is rich in vitamin B12, it is rich in proteins, and it is low in fats and sugars. Now vitamin B12, students, naturally is extracted from animals. It is a non-vegetarian sourced vitamin, but स्पिरुलिना में विटामिन B12 बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है. Therefore it comes in because it is kind of a plant, right? Algae are plant-like organisms, therefore we consider it a vegetarian source, right? पता है आप स्पिरुलिना को अपने घर में भी लगा सकते हैं. आप स्पिरुलिना का हार्वेस्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? What you gonna do it? You are going to set up a glass tank in a bright shady place. Bright shady place मतलब there should be no sunlight. सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, सनलाइट आप यूज नहीं करेंगे. Alright, you are going to put that glass tank in a shady place. Then cover it with a shade net or place in a cool area. उसको नेट से आपने कवर कर लिया. Then fill the tank with pond water. Why pond water and why not mineral water or fresh water? Because उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे. पॉन्ड वाटर में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होंगे, जिसमें आपको ये भी मिल जाएगा स्पिरुलिना, एल्गी भी तो होगी उसमें. Add live spirulina from a pond. Alright, you need to add spirulina, live spirulina from another pond. Then stir the water twice a week. Alright, let it sit, but you need to stir it twice a week. And after 3 to 6 weeks, harvest spirulina using a fine cloth. Then you filter that spirulina out. You took a water tank, you put it in a shady and cool place, then you put live spirulina it and cover it with the net and stir it twice a week. After 3 to 4 weeks, you can harvest spirulina like farmer harvest crops, right? आप अपने घर में हार्वेस्टिंग कर सकते हैं एक बहुत ही न्यूट्रिशियस और सुपर फूड एल्गी दैट इज स्पिरुलिना. सो इस सेशन में हमने बात की माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, और मैंने स्टार्टिंग में बताया था वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेल. And this is the sum of this whole chapter. We were talking about the invisible living world beyond our naked eyes. We have talked about so many microorganisms, bacteria, fungi, algae, right? Now let's sum all this together, and where are we going to start with? We are going to start with cell. Why? Because it is the basic unit of life. बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम अभी, राइट, साइंस में भी, तो उसकी शुरुआत कहां से हो रही है? सेल से हो रही है. तो आइए इस पूरी चैप्टर का समरी पढ़ते हैं. क्या है इसमें? दैट दे आर द टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सेल्स आर व्हाट? दे आर द टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक्स. Just like bricks make up the wall, wall make up the whole building, right? Similarly, organisms are made up of what? Cells.
Cells will make up tissue, tissue will make up organ, then organ system, and then the whole organism. We have talked about this, right? And they perform essential functions. Cells perform essential functions. Cell will perform digestion, cell will perform respiration. Therefore, we are able to perform digestion and respiration. और ये ऑर्गेनिजम्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिनसे सेल बना है, सेल एक भी हो सकता है, सेल बहुत सारे भी हो सकते हैं. Therefore, organisms are made up of two types, unicellular and multicellular. We have unicellular organisms जिसमें एक ही सेल होती है, right? They are single celled. One cell does everything needed to stay alive. That means this single cell will perform all the functions that this organism need. अब क्योंकि इस ऑर्गेनिज्म के पास एक ही सेल है, तो यही सेल पूरी बॉडी हो गई. Therefore, all the functions are performed by this single cell. What are the examples? Bacteria, protozoa, right? We have studied about it. Then we have multicellular organisms, जिसमें हमें ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल जाता है. कैसे? सेल है, बहुत सारे सेल है, उनको टास्क दे दिया, टिश्यू बन गए, टिश्यू का ऑर्गन, ऑर्गन का सिस्टम, देन ऑर्गेनिज्म. आई जस्ट टोल्ड यू अबाउट दिस, राइट? सो देयर आर many celled. Multicellular are what? Many celled. Each cell has a special job. Correct? हर सेल के पास अपना एक टास्क होगा. सारी सेल्स एक जैसा काम थोड़े कर सकते हैं. Then cells work together to increase the organism's survival. सारी सेल्स मिलके when they work together, they increase the chances of an organism's survival. Then what we studied in this chapter, we studied that algae and fungi can be unicellular or multicellular. That means just like organisms, microorganisms can also be unicellular and multicellular. That is single celled and multiple celled. अब इसमें examples कौन कौन से आ सकते हैं? Mold is a multicellular fungus, right? मोल्ड की हमने बात की थी, इट इज अ फंजाई. और यूनिसेल्युलर फंगस कौन सा होगा? ईस्ट, जिसे हम अपनी क्या बना रहे थे? ब्रेड्स. इफ यू रिमेंबर, वी डिड एन एक्टिविटी, राइट? सो एल्गी एंड फंजाई कैन बी बोथ मल्टीसेल्युलर एंड यूनिसेल्युलर. अच्छा, सिर्फ ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें यूनिसेल्युलर ही होता है, मल्टीसेल्युलर नहीं होता? योर बैक्टीरिया, इट इज ओनली यूनिसेल्युलर. इसमें आपको कोई मल्टीसेल्युलर स्पीशीज नहीं दिखेगी. एंड व्हाट डिड वी स्टडी? वी स्टडीड अबाउट द सेल स्ट्रक्चर. सेल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? द हिडन वर्ल्ड, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इनका सेल स्ट्रक्चर कौन सा होता है? फंजाई. फॉर एग्जाम्पल आप फंगस लीजिए, क्या होगा इसके सेल में? बेसिक सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले तो आप ये बताइए. बेसिक सेल स्ट्रक्चर में क्या होगा? दैट यू हैव अ सेल, देन यू हैव न्यूक्लियस हियर, राइट? यू हैव न्यूक्लियस हियर. आउटरी लेयर क्या होगी? सेल मेम्ब्रेन. प्लांट्स में क्या होता है? सेल वॉल. एंड दिस इनर पार्ट इज व्हाट? योर साइटोप्लाज्म, राइट? दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल. बट फंजाई में सेल वॉल इज प्रेजेंट, राइट? एनिमल सेल में ही तो सेल वॉल नहीं होता, बट फंजाई में सेल वॉल इज प्रेजेंट एंड नो क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा मतलब क्लोरोफिल नहीं होगा, और क्लोरोफिल नहीं होगा मतलब वो फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकते. मतलब फंजाई कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जस्ट लाइक एल्गी, राइट? सो no photosynthesis, they cannot photosynthesize, they cannot make their own food, therefore they get their nutrition from another organism. And what other organism that we talked about? We talked about bacteria. Bacteria is very primitive, therefore there is no true nucleus. Nucleus नहीं होगा, राइट? जैसे सेल में होता है एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. बैक्टीरिया के पास देयर इज नो ट्रू न्यूक्लियस एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, एंड हैव न्यूक्लियोइड. जस्ट लाइक वी हैव अ डीएनए, बैक्टीरिया ऑल्सो हैज अ जेनेटिक मटीरियल, करेक्ट? It also has to pass on its gene to its generation, the future generation like we do. Therefore, वो genetic material हमारे अंदर किस में होता है? न्यूक्लियस में होता है, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम किससे बना होता है? डीएनए से बना होता है. You will study it in further classes, right? But अभी के लिए आप ये जानिए कि हमारा जो डीएनए है, जेनेटिक मटीरियल है, वो न्यूक्लियस के अंदर होता है. It's the head of the cell. But बैक्टीरिया के पास हेड नहीं है, प्रॉपर हेड नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, बट इट हैज सम काइंड ऑफ जेनेटिक मटेरियल विच वी कॉल न्यूक्लियोइड. न्यूक्लियोइड मतलब इसका डीएनए. बट आप देख सकते हैं इसमें कोई प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, कोई न्यूक्लियस नहीं है.
और हमने क्या पढ़ा था? हमने ये पढ़ा था that yeast, protozoa, algae, fungi, plants and animals have well defined nuclei and other structures. Bacteria is very primitive, right? It does not have a well defined nuclei, but all these organisms have nuclei and other cell organelles also. इन सब चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? वी नीड अ माइक्रोस्कोप. हमें पता कैसे चला? ये बैक्टीरिया ऐसा दिखता है, फंजाई का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, सेल ऐसी होती है. कैसे पता चला? माइक्रोस्कोप, राइट? सो देयर इज अनदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इट इज द मोस्ट पावरफुल माइक्रोस्कोप. यू कैन assume by the word electron microscope that it will show you even the sub सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स. दैट मीन्स सेल के अंदर भी कुछ प्रेजेंट है तो ये वो भी हमें शो कर सकता है. कैसे? बिकॉज इट कैन मैग्निफाई अप टू 10 लाख टाइम्स. कैन यू इमेजिन? 100-200 टाइम्स हमने पढ़ा है अभी तक, बट इट कैन मैग्निफाई अप टू 10 लाख टाइम्स. मतलब किसी भी चीज को 10 लाख टाइम्स ज्यादा बड़ा करके, ज्यादा मैग्निफाई करके दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन शो. helps to see subcellular structures. Subcellular structures matlab nucleus, right? And other cell organelles like your Golgi bodies, endoplasmic reticulum. इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे अभी, है ना? तो इन सब सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स को भी ये माइक्रोस्कोप हमें शो कर सकता है. So what did we learn today? We learned that microorganisms can be unicellular or multicellular. Similarly, our organisms also unicellular and multicellular. We talked about algae and how is it important. We even talked about spirulina and how we can harvest it. Now let me test your knowledge for today's session. Microalgae are best described as tiny animals living in water, microscopic plant-like organisms, small insects found on trees, bacteria that live in soil. Microalgae क्या होता है? Microscopic plant-like organisms, right? They are plant-like. They can make their own food. Which of the following are examples of microalgae used as health supplements? कौन से microalgae हमें हमारे health supplements दे रहे थे? Amoeba and Euglena, Spirulina, chloral and diatoms, mushrooms and yeast, ferns and mosses. These are algae. Yeast is an example of multicellular fungus, unicellular fungus, multicellular plant, unicellular bacteria. Plant or bacterium to yeast है ही नहीं. Yeast is a fungus. Which fungus? It's a unicellular fungus. Alright. So that's all for today's session. Today we completed our chapter 2 and in the next session we are going to start with our chapter 3. Till then, keep studying and thank you very much.